Hello everyone, this is Varun Grover, mentor at Career Launcher. Today I'm really happy to welcome Rudransh Ahuja. Now Rudransh hails from Haldwani in Uttarakhand and he has studied at Nirmala Convent Senior Secondary School, again from Haldwani only. He scored a very impressive 98.2 percentage marks in the CBSE board examination. And when it comes to CUT examination, he has been absolutely outstanding. He scored a perfect 100 percentile in history, 99.86 percentile in political science, and above 99 percentile marks in English and mathematics as well. Now, when it comes to the college, which he has secured after getting such good marks in CUT examination, he got admitted to the crown jewel of the Delhi University, that is Hindu College, and that also for a very prestigious course, that is BA Honors Economics. So, Rudransh, a very warm welcome to you and heartiest congratulations to you and to your entire family. Thank you. Thank you so much, sir. Rudransh, now tell me about your overall CUT preparation journey. How did you approach it? How did you balance the CUT along with the CBSE board examination? Okay, how you were preparing for both simultaneously? Uh, so as we know, the course is same, but the approach is bit different. So in the beginning, I was just focusing on reading the chapters thoroughly from NCRT to get a better understanding of the chapter. And for CUT, I was just trying that whichever chapter I complete, I just practice a few MCQs to actually balance the preparation for CUT boards and CUT and boards. और सर मैंने ये भी सुना था कि इंग्लिश को लोग जनरली थोड़ा वो कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं बिकॉज दे थिंक कि बोर्ड की तरह इसकी भी इंग्लिश हो जाएगी। एंड मैंने ये भी सुना था कि इंग्लिश इज द डिफरेंस मेकर, इट इज़ द रियल डिफरेंस क्रिएटर। तो मैं ट्राई करता था कि जब भी मेरी छुट्टी होती थी, संडे या फिर कोई भी और भी हॉलीडेज होता, तो मैं इंग्लिश को एटलीस्ट 1 घंटा दूँ, स्पेशली वो कैब पार्ट, बिकॉज अच्छी वो कैब आती है सीवीटी में। तो दैट्स व्हाट आई ट्राई। Okay, so Rudransh, now tell me one thing. जब हम वो एक महीने की बात करते हैं, वंस द बोर्ड एग्जामिनेशन गॉट ओवर, ओके, वंस इट गेट्स ओवर, तो वो बहुत क्रूशियल महीना होता है. यस सो सर। नाउ टेल मी वन थिंग, आपने क्या ट्वीकिंग्स ऐसी करी थी, लाइक वंस द बोर्ड एग्जामिनेशन गॉट ओवर एंड उस एक महीने में ऐसा क्या आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में चेंजेस करे थे टुवर्ड्स सीयूईटी ओरिएंटेड? So for this, I would like to share a short story. Uh, my history board exam was near perfect, और 3-4 दिन बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने एक हिस्ट्री का मॉक दिया टू सी वेयर आई स्टैंड। एंड टू माय सरप्राइज आई स्कोर्ड 160 or 170। दैट वाज रियली लो। एंड आई थॉट कि मेरा हिस्ट्री का ऑलमोस्ट परफेक्ट गया, एमसीक्यूज वर ऑल राइट, तो वेयर आई गोइंग रॉन्ग। तो when I calmed myself down, तब मैंने सोचा कि I need a different strategy altogether for this. So that's when I realized कि सारा बुक का तो मेरे को आता ही है, like I am all well versed with the theory. What I needed to focus was on the facts, on the timelines, everything, like everything, even the appendix, footnotes, कुछ भी पूछ रहे हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं एग्जैक्टली। तो मैंने आखिरी महीना हर सब्जेक्ट में यही ट्राई करा कि जो कमी है, लाइक डेट्स, टाइमलाइन, जिस पे हम बोर्ड्स के लिए उतना फोकस नहीं करते हैं, कि पता है कि बोर्ड्स में इतना नहीं आता है, बट सीवीटी में वो पूछते हैं ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे मैंने लास्ट 1 मंथ यहीं पे ट्राई करा। और इंग्लिश में भी आई नो कि ग्रामर में कर सकता हूँ, वो कैब वॉज द पार्ट जहाँ पे मैं थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा था। तो जो हमारी इंग्लिश फैकल्टी थी, सुधा मैम, शी वॉज रियली ग्रेट। हर वे ऑफ टीचिंग वॉज incredible, like entertaining, humorous and knowledgeable at the same time. She was really experienced, तो उनसे बहुत हेल्प मिली। एंड साथ में मॉक्स लगाए। तो और वो कैब लाइक कंटिन्यूसली 1 to 1.5 आवर में पढ़ता था, ताकि वर्ड से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बिकॉज सारे वर्ड्स एक तरीके से सेम ही लगते हैं, काफ़ी सारे पी से बहुत सारे वर्ड्स हैं, ए से बहुत सारे वर्ड्स, तो इट्स रियली कंफ्यूजिंग। तो आखिरी 1 मंथ में यही थी कि जहाँ कमी लग रही है उस पे फोकस करा जाए, rather than reading the
whole book again and again. So 1 second, sir. Yeah. Very impressive, Rudransh. How you have spoken. Very, very impressive. I'll tell you why. आपने बोला कि आपने पहला, you were thinking that yes, you have actually scored almost perfect score in history in CBSE board examination. So you were having that thinking कि अब तो मुझे सब कुछ आता है. So you attempted one mock and you got 160 marks in that mock. And how correctly you have analyzed it, कि where you were lagging. And I always keeps on telling in the classes ki specifically talking about the CUT examination timelines, boxes, even the appendix you have spoken about. These are so important things, and they are framing Yes, sir. so many questions from there. So you have analyzed it by yourself. That is such a good thing to do. And from 160 within a month, I would say you have reached to Yes, 250. You have scored yes, 100 percentile, 100 percentile in CUT examination. So that is very impressive. This is about that. Then you have also spoken about how what you have done in English. Okay, how you have improved your vocabulary with the help of teacher and then you yourself. So it's a very, very effective strategy. So I would want to compliment you for your efforts and how you thanks. realized your mistakes and then worked upon those mistakes. That is rather more important. So very good, Rudransh. Okay. Now, Rudransh, tell me about the career launchers role. Okay, how CL career launchers coaching and mock test help shape your preparation. What was the biggest difference you would say that सर अभी आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट करा तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल एवरीवन दैट जैसे ही हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लासेस स्टार्ट हुई आपको पता था कहाँ एम्फसाइज करना है. यू एम्फसाइज ऑन फैक्ट्स, यू एम्फसाइज ऑन सोर्सेज. लाइक आपने सारे सोर्सेज हिस्ट्री में हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 10 to 12 सोर्सेज होते हैं. इट्स रियली हार्ड टू स्टडी ऑल ऑफ देम. और कभी कभी सोर्स पढ़ के लगता है कि इससे तो कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता और बन जाता है. तो आपने हर ईयर को एनालाइज करके जैसे क्वेश्चंस हमको बताए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे. इट वाज रियली रियली हेल्पफुल. सेकेंडली द सीयूईटी मास्टर फैक्ट शीट, इट वाज गेम चेंजिंग सर. लास्ट 3 to 4 days I relied completely on that because मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी and I came to realize that everything is covered. I mean, it was really efficient. It was really helpful for me. Thirdly, sir, you shared many questions on Telegram, and I also told you that some of the questions directly came in my shift. It was really helpful, really great. And again, my English faculty, Sudha ma'am, she was really, the way she taught, it was really interesting. And she covered every aspect from like every level of vocabulary, advanced vocabulary, basic vocabulary, poetic devices, grammar rules. We sometimes ignore it, but grammar rules in an interest, she taught it in an interesting way. It was really helpful. And the mocks, sir, I when I gave the mocks, I gave at least 20 to 25 mocks, I'll say. I realized that the mocks were designed according to the CUT level difficulty. जब मैंने mocks दिया, I realized some were easy, some were moderate, and some were hard. I also analyzed कि PYQs भी हैं mocks के अंदर. That was really helpful. इंग्लिश में इजी पैसेज, टफ पैसेज जिसमें 2 से 3 ठीक हो रहे थे मेरे. मैथ्स में इतने टफ क्वेश्चन जिसमें मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था. टफ पोएटिक डिवाइस, वोकैबुलरी, हिस्ट्री पॉलिटिकल में फैक्ट्स, वो सब बहुत एक मॉक्स में है जिससे हमको एक एग्जाम लेवल प्रिपरेशन मिलती है कि हम एग्जाम में चाहे जैसा भी एग्जाम आए टफ के लिए प्रिपेयर करते हैं. कि वहां पे हमको कोई शॉक जैसा ना लगे कि विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट जो भी आए आगे से. So it was really helpful, I believe. The team, I really think, has put a lot of efforts in making the mocks. So that was also really helpful. thank you very much, Rudransh, for your compliments you have given to the all the faculties. And yes, I have worked very hard. We all are working very hard for you students only. And when it comes to mocks, we are just ensuring that students are getting real time experience. So they Exactly. don't fear. They don't fear in the actual examination.
सो वी आर इंश्योरिंग कि वो एक बच्चों को ना एक्चुअल जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो मिलना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर वो एक फियर फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाए। सर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट। सर जो क्या? इंटरफेस है करियर लॉन्चर के मॉक्स का वो बिल्कुल सेम है सीयूईटी का जो एनटीए का जो इंटरफेस है। तो अब सीएल के मॉक के मैंने इतने सारे मॉक्स लगाए थे और जब मैं एनटीए का एग्जाम देने गया तो इंटरफेस वाज सेम। तो आई हैड नो प्रॉब्लम इन नेविगेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट फेल्ट फेमिलियर कि आई नो like it was familiar, it's a big thing, so that was also helpful. इंटरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. इंटरफेस समटाइम कैन बिकम अ गेम चेंजर, Navigation. is going to cost you Exactly. then. So yeah, that is very important. Okay. Now, Rutransh, tell me, you have scored 100 percentile in history. Okay. And very, very good marks in every other subject in the CUT examination. So, was there any moment in the whole preparation journey where you were thinking that things were feeling a bit uncertain, where you were feeling a bit low? And if that has happened, then how did you pull yourself back? So it was a journey of 1 year. I mean, 1 year and 2 3 months. तो ऐसा होता है. And in my case, sir, I wanted economic honors, and maths is compulsory for it. And maths से I had developed a phobia 10th से. तो every time I worked really hard in maths, सबसे ज़्यादा मैथ्स ही पढ़ता था मैं, 5 to 6 आवर्स खाली मैथ्स पढ़ता था, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। 10th 11th में इतना पढ़ने के बाद भी मेरा सबसे कम स्कोर मैथ्स में आता था, सबका स्कोर मेरे से ज़्यादा मैथ्स में आता था। तो मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, बट एक ऐसा इंसान होना आई बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें हमेशा मोटिवेट करता रहे। इन माई केस इट वॉज माई मेटर्नल अंकल। थ्रू एनी सिचुएशन व्हेन आई वुड कॉल हिम, he'd say कि there is nothing you cannot do. Every single time he motivated me, he made me believe that when it will matter the most, the things will work in your favor. Just keep working hard. And I'm really grateful to God that this happened. And I still do not believe कि maths का exam was really hard this year in CUET and the cutoff गिरी है. I don't even know how I managed to score good. I mean, I'm just grateful. It was my faith in God and uh, कुछ लोगों का believe in me जो हमेशा मुझे push करते रहे. Because history and political I know कि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं I really thought कि मैं कर लूँगा बहुत मेहनत करके, but maths में मेरे को था कि मेहनत करने के बाद भी results नहीं आ रहे हैं. तो it was really hard for me to be honest, but support के साथ, गॉड पे फेथ के साथ इट जस्ट हैपेंड. आई एम रियली ग्रेटफुल. जस्ट कीप वर्किंग, एक बार हो ही जाएगा आफ्टर मेनी फेलियर्स. आई जस्ट बिलीव इन दैट. Sir, that you're so thankful to your maternal uncle, you're so thankful कि उन्होंने आपको हमेशा से मोटिवेट किया. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट you have also realized कि yes, students in his journey, in their journey, they require such people. Whenever you are एग्जैक्टली. feeling low, आप उनके पास जाओगे, they would motivate you. It can be your एग्जैक्टली. mentor, it can be your family, it can be your uncle, it can be a friend also. So they are very एग्जैक्टली. important. At the same time, I would appreciate you again how you were fearing one subject when you yourself has said कि बाकी सब मेरे से अच्छा स्कोर कर रहे थे. But what you did not quit. Rather, you worked upon your weaknesses and you ended up scoring good in that subject as well, which others are not being able to. थैंक And earlier you were fearing it. So that is also very good, Rudransh. So again, my compliments to you. So now, Rudransh, you have gone to a very good यू premier सर. college, crown jewel of the Delhi University, that is Hindu College. Okay. And that also for your favorite course only, be honors in economics. Now tell me one thing. What advice are you giving for the Yes, sir. future aspirants who are looking up to you, who also wants to get into such good premier colleges for such good courses? What is your advice for such future aspirant? What do you wish someone had told you on day one itself?
Sir, as I mentioned, the course for board exams and CUET is same, but the approach is totally different. When I started studying for CUET in the last 1 month, I really thought कि मैं boards में तो कुछ पढ़ के ही नहीं गया था, मुझे ऐसा लग रहा है. इतनी सारी dates, I mean, at least 500 तो होंगी. आपको पता है सर, हिस्ट्री पॉलिटिकल में ज़्यादा भी हो सकती है. तो I would really like to give this advice कि जब भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, पहली बार भी पढ़ रहे हो, दूसरी बार भी पढ़ रहे हो, it is very very important that you emphasize on dates, timelines, बॉक्सेस. मतलब स्टार्टिंग से ही अगर आप उनसे फेमिलियर हो जाओगे तो आखिरी 1 मंथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. एनसीईआरटी इज द बाइबल, मेनी स्टूडेंट्स से. आई विल जस्ट रिपीट इट बिकॉज इट्स ट्रू. इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स डोंट रीड एनसीईआरटी फॉर बोर्ड एग्जाम, और वो ठीक भी है. बट सीयूईटी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप सीयूईटी के लिए अगर इकोनॉमिक्स से एग्जाम के लिए जा रहे हो तो एनसीईआरटी से, वो लाइन से, बॉक्सेस से, अपेंडिक्स, इवन द ग्लॉसरी from micro, macro and Indian, it's really really important that you read every single line. और वो आखिरी 1 महीने के लिए छोड़ना is a gamble. बहुत पाइल अप हो जाता है 4 to 5 सब्जेक्ट्स 1 महीने में प्रिपेयर करना विद इतनी डेप्थ के साथ, बहुत टफ पड़ता है एक्चुअली. तो आई जस्ट से कि जितने चैप्टर्स हुए हैं, चैप्टर्स के साथ में एमसीक्यू लगाओ, डेट्स करो, एंड जस्ट सी कि वेयर आर यू आर लैगिंग. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में लैग कर रहे हो, comprehension based question में लैग कर रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड में लैग कर रहे हो. बिकॉज हिस्ट्री पॉलिटिकल में व्हाट हैपेंस कि दे गिव यू 4 statements and each of them seems to be correct. There is just a minor error, and you can only identify that error if you have read the book thoroughly, or you have practiced enough MCQs. You need to analyze. That's the only way to do it. For English and GAT, I did not have GAT, but my friends had. So I'll just like to give this one advice that English and GAT ke liye, whenever you have holidays, you need to give some time to it. Otherwise, I mean, it is the main difference. It is the main game changer, English and GAT. If you perform well in English and GAT, I mean, you can get any college and course you want. That's from my side. I'm going to tell you that yes, आने वाले students, future aspirants are surely going to get benefited out of your this advice. Very detailed advice. You again focus on every subject. You have also tried to focus on GAT, which was not for which you even haven't yet appeared. So that is also very good, Rudransh. So Rudransh, thank you so much for sharing your journey with us today. From Haldwani to Hindu College. Now we are that's quite an achievement. Okay, we are incredibly proud of you, very proud of you. And we know this is just the beginning. All the very best to you, Rudransh, for your all the future endeavors. Thank you very much.